નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો કે ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત આપણી આસપાસ સમયની આરપાર। છેલ્લા ઘણા સમયથી કર્ણાટકમાં કંઈક અલગ જ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। દિવસે ને દિવસે અનેક મુદ્દાઓને લઈને કર્ણાટકમાં એક અજંપાભરી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। ઘણા મુદ્દાઓ છે જેના પર અત્યારે કર્ણાટક લડી રહ્યું છે। આ બધા મુદ્દાઓ અને શું છે ત્યાંની અત્યારની પરિસ્થિતિ એ પણ આજે એક નજર કરીએ આપણા આ કાર્યક્રમમાં। हिंदू मंदिरना समारंभों मुस्लिम वेपारीओ पर प्रतिबंध, मुस्लिम वेपारीओ पासेथी केरी ना खरीदवी, मुस्लिम कसाईओ पासेथी मांस न खरीदवुं जेवा केम्पेन कर्नाटक में शुरू थया छे। कहेवाय छे के आ बधानी पाछळ हिंदू संगठनो छे। आ बधुं हिजाबना विवाद पछी हवे खुलीने थई रह्युं छे। दक्षिण में भाजपना वावटा नाखवा घणा वर्षोथी मेहनत चाली रही है, पण आवा विवादों उजागर थता हवे बधो दोष भाजप अने मोदी पर ढोळवामां आवी रह्यो छे। भारतना सौथी धनिक महिलाओमांना एक किरण मजुमदार शोए कर्नाटक सरकार ने अचानक वधी रहेला धार्मिक ध्रुवीकरणनी समस्यानो उकेल लाववा ट्वीट करीने विनंती करी छे। कह्युं छे, जो क्यांक देशनी सिलिकॉन वेली सांप्रदायिकतानी राजनीतिनो भोग न बने। हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है, लेकिन साथियों जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है। उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। जब संविधान के अनुरूप व्यवस्था चलेगी, हर बेटी को सुरक्षा, हर बेटी का सम्मान और हर बेटी के स्वावलंबन का कार्य होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। और मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है। अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या विम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती। एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए, सबने इसको स्वीकार। ढेर सारे लोग सक्रिय हैं, मगर मैं इतना बताता हूं कि इनकी मंशा सफल नहीं होगी। कोर्ट का जजमेंट आने के बाद देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। किरण मजमूदार शो भारतना सौथी धनिक महिलाओमांना एक छे।
આજકાલ તેઓ ચર્ચામાં છે. ના અદાણી કે અંબાણી સાથે તેમની કોઈ કોમ્પિટિશન નથી. કિરણ મજુમદાર શો તેમના એક ટ્વીટને કારણે ચર્ચામાં આવ્યા છે. બાયોટેકનોલોજી ફર્મ બાયોકોનના વડા કિરણ મજુમદાર શોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કર્ણાટક સરકારને અચાનક વધી રહેલા ધાર્મિક ધ્રુવીકરણની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા વિનંતી કરી છે. કિરણ મજુમદાર શોની કંપની કર્ણાટકની રાજધાની બેંગલુરુમાં આવેલી છે, જે ભારતના ઉભરતા ટેકનોલોજી હબ તરીકે ઓળખાય છે. જોગાનું જોગ કિરણ શોનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે કર્ણાટકમાં કટ્ટરપંથી હિન્દુ સંગઠનો મુસ્લિમ વેપારીઓને મંદિરના મેળામાં સ્ટોલ લગાવવાથી અટકાવવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ સંગઠનો હિન્દુ સમાજના લોકોને મુસ્લિમ કસાઈઓ પાસેથી માંસ ન ખરીદવાની અપીલ કરી રહ્યા છે. હિન્દુ સંગઠનોનું કહેવું છે કે મુસ્લિમ કસાઈઓ તેમની ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર પ્રાણીઓની કતલ કરે છે. આટલું જ નહીં, આ સંગઠનોની માંગ છે કે મસ્જિદોમાં લાઉડસ્પીકર લગાવવા પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવે. ઉપરાંત કેરી વેચનારા મુસ્લિમોનો બહિષ્કાર કરવાની અપીલ પણ તેઓ કરી રહ્યા છે. This whole thing started in one school. However, now it has spread to other districts, which is very unfortunate. The matter is seized by the High Court. And similar situations were there in different states in different times, and High Courts have given a lot of judgments and directions also. And our matter is also in the High Court. As I speak now, the matter is in the proceedings in the High Court is going on. So as far as legality of the whole thing is concerned, we have put our case very clearly, constitutional and legal, Karnataka Education Act provisions we have been put. But however, we are waiting for the directions of the High Court. And outside, there has been some disturbances in few places. Therefore, I am appealing to the students that they have to maintain peace and harmony, because ultimately tomorrow they have to sit together and do all the educational activities, academic activities. Therefore, peace and harmony should be maintained. Second is I direct the school administration to see that peace is maintained and there is no occasion for clash of students. As well as I appeal to the teachers to see that peace is maintained in the respective institutions. Plus, I am asking all the concerned people from outside not to have a provocation statements and not to provoke the situation. It's a very sensitive issue as far as students are concerned. So the emotional, High Court has said that we will not go by emotion, we will go by the legality. So let us wait for the directions of the High Court. Till such time, there has to be peace to be maintained, and I appeal everyone to keep the peace. Sir, the matter was also raised in Parliament today. Now, what opposition parties are saying that through these tactics, BJP is trying to polarize or divide the country. See, these are all the allegations which doesn't have any grounds. See, as a ruling party in Karnataka, we have got our own responsibilities to maintain law and order, peace, and proper education has to be given to the students. Therefore, we are just going by the law. There is no question of any other things. That's why we have put our stand in front of the High Court legally, and that will be scrutinized by the judiciary. And let the judiciary come out, then we will abide whatever the court says. All my school and college campuses are peaceful, and our students have behaved very well since last 2 days. Very well, and I thank them for their restraint. Now the matter had been to single judge. Now today, 3-member judge headed by our Honorable CJ of High Court, Karnataka High Court, has heard the matter, and they have passed an order that they are going to hear the case day by day, day-to-day basis, and they have appealed all the stakeholders not to precipitate the matter, and they have said that all the schools can open, colleges can open, but no religious dress code should be followed from both the sides, not one side, from both the sides. And I think the High Court 3-member bench
has shown its intent to have a peaceful atmosphere to do the proceedings and give a judgment in this case. Since there is last 2 days there is no incident, we want incident free in future also. So I want the cooperation of the media in this case, and we'll all work together. And we have taken a decision in a meeting now that up to 10th standard the schools will be open on Monday, and looking into the situation as a second stage we will decide about 11th 12th standard and other degree. મામલો આટલો જ નથી. આ સાથે રાજ્યમાં હિન્દુ ધર્મના પવિત્ર પુસ્તક ભગવદ્ ગીતાને શાળાના અભ્યાસક્રમમાં સામેલ કરવાની યોજના છે. ઉપરાંત 18મી સદીમાં મૈસૂરના શાસક ટીપુ સુલતાન સંબંધિત એક પ્રકરણને અભ્યાસક્રમમાંથી દૂર કરવાની પણ દરખાસ્ત છે, કારણ કે આ પ્રકરણમાં ટીપુ સુલતાનનું મહિમાગાન કરવામાં આવ્યું છે. આ તમામ વિવાદો પર સ્થાનિક લોકોનો અભિપ્રાય બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયો છે. ટીકાકારોનું માનીએ તો આ પગલાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની રાષ્ટ્રવાદી સરકાર દ્વારા મુસ્લિમોને હાંસિયામાં ધકેલી દેવાના પ્રયાસો સાથે સંબંધિત છે. ઘણાને આશંકા છે કે તે ભારતના સમૃદ્ધ રાજ્યની છબીને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. અલબત્ત બે ઘડા છે, એક આ બધા પગલાંની હિમાયત કરે છે અને એક વર્ગ તેની ટીકા. ये कहा जाता है कि हिजाब जो है वो चेहरे पे डालना चाहिए और डाल करके निकलना चाहिए. क्यों, किससे डर, किससे पर्दा? तो भैया मैं कहती हूं, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि पर्दा उससे करना चाहिए जो हमारे तरफ कुदृष्टि रखता है. तो एक बात तो निश्चित है कि हिंदू कुदृष्टि नहीं रखते. जहां नारी का इतना श्रेष्ठ स्थान है वहां पर हिजाब पहनने की जरूरत है क्या उस देश में? नहीं. भारत में हिजाब पहनने की आवश्यकता नहीं है. अरे हिजाब तो तुम्हें घर में पहनना चाहिए. स्कूल एक शिक्षा का मंदिर है. स्कूल न मस्जिद है न हिंदुओं का मंदिर है. आज कोई हिजाब लगा के जाएगा, ओवैसी कहते हैं मेरी मर्जी जो मैं पहन के जाऊं. अरे भाई, आपकी मर्जी आपके घर में है. आज हिजाब लगा के जाएंगे, कल कहेंगे कि हम यहां पर कोई दूसरा पक्ष कहेगा या दूसरे लड़के कहेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, तो तीसरा कहेगा कि हम क्लासरूम में हवन करेंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे. ये कहेंगे कि कैंटीन होगा हलाल मीट का, वो कहेगा बिना प्याज लहसुन का. इसीलिए आज जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है. PIF जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है, और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान की एंट्री हो गई. आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए. ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए. ये कानून खत्म हो गया ना, हिंदुओं में पहले बाल विवाह होता था, खत्म हो गया. इसीलिए एक देश एक कानून, मजहबी कानून नहीं बल्कि एक देश एक कानून. એટલે જ કિરણ મજુમદાર શોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કર્ણાટક સરકારને અચાનક વધી રહેલા ધાર્મિક ધ્રુવીકરણની સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા વિનંતી કરી છે. કર્ણાટકમાં અંદરખાને ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે, પણ હિજાબ મામલો ઉજાગર થતાં અચાનક લોકોની નજરમાં આવ્યું છે. કર્ણાટક એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં વિવિધ જાતિઓ, વિવિધ ભાષાઓ બોલતા સમૂહો અને ધાર્મિકો સમુદાયો વસે છે. ભાજપે છેલ્લી સતત 4 સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં આ રાજ્યની મોટા ભાગની સંસદીય બેઠકો જીતી છે. ઘણા વર્ષોથી ભાજપે મુસ્લિમ વસ્તી ધરાવતા કર્ણાટકના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો અને ગામડાઓમાં હિન્દુ રાષ્ટ્રવાદની રાજનીતિ પર કામ કર્યું છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘે અહીં તેના મૂળ ઊંડા જમાવી લીધા છે. અગાઉ પણ અહીં હિન્દુ સંગઠનોએ બાર અને પબમાં જતી યુવા પેઢી પર પ્રેશર ઊભું કરીને નૈતિક પોલિસિંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
આ સાથે અહીં લવ જેહાદ નામનું અભિયાન પણ ચલાવવામાં આવ્યું છે. લવ જેહાદ એ એક શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ કટ્ટરપંથી હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા મુસ્લિમ યુવકો પર લગ્ન દ્વારા હિન્દુ મહિલાઓને મુસ્લિમ બનાવવાનો આરોપ લગાવવા માટે કરવામાં આવે છે. हमने देखा किस तरह से इन्होंने कोशिश की है कि सेक्टेरियन लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे जम्मू कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, एक दूसरे के साथ लड़ें. मगर हमारा जो पीडीपी का जो हमारा इरादा है, जो हमारी स्ट्रगल है, वो इसके खिलाफ रहेगी. जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये इसको मजहब का मसला बनाना चाहते हैं. और हमने बार बार कहा जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाया गया है. आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब इसको मसला बनाया. क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है. तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हुआ क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है. अब पूरे मुल्क के अंदर वही तजुर्बे चलेंगे. अभी देखिए डिलिमिटेशन यहाँ की है उन्होंने, किसी का इलाका किसी के साथ मिलाया, कोई नंबर्स नहीं है. कहीं जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1.25 लाख वोट है. तो कोई इन्होंने तरीका नहीं अपने. अब ये मुल्क के अंदर भी इसको रिपीट करेंगे. तो मेरे कहने का मकसद है कि इसको जो हमारा मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहा है, ये बीजेपी के एजेंडे के ऊपर चल रहा है. मेरा डर ये है, मेरा एप्रहेंशन ये है, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप एट हिजाब. इसके बाद जो दूसरी हमारी निशानियां, तीसरी निशानियां, चौथी निशानियां, ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तानी बने. देश में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है. हमें लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार लोगों के खाने और पहरावे पर अपना नियंत्रण रखना चाहती है, लोगों के मौलिक अधिकारों का ये हनन है. हमें लगता है कि इस देश में दुपट्टा पहनना, हिजाब पहनना, घूंघट डालना, ये भारतीय नारियों का एक उनका अधिकार और उनका एक जेवर है. जिस तरह से संघ परिवार के लोग हिजाब को लेके देश में विवाद खड़ा कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि अब मुस्लिम लड़कियां कॉलेज स्कूल जा रही हैं, ये उनकी परेशानी है कि वो शिक्षा प्रदान करके समाज में अपना स्थान बना रही हैं, क्या वो उनकी परेशानी है. और ये भी पूछना चाहते हैं कि बेटी पढ़ाओ नारे का क्या हुआ, क्यों इस तरह से સ્કૂલો में लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है. જાણકારોનું કહેવું છે કે દબાણ ઊભું કરીને ભાજપ અલગ પ્રકારની રાજનીતિ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ભાજપ હિન્દુ રાષ્ટ્રવાદ અને વિકાસના આધારે નવો મતદાર બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. કિરણ મજુમદાર શોએ તેના ટ્વીટમાં રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન બસવરાજ બોમ્મૈયાને ટેગ કરીને લખ્યું હતું કે કર્ણાટક હંમેશા બધાને સાથે લઈને આર્થિક વિકાસને પ્રાથમિકતા આપે છે. હવે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અને બાયોટેકનોલોજીનું શહેર સાંપ્રદાયિક બની જશે તો તેનું વૈશ્વિક નેતૃત્વ સમાપ્ત થઈ જશે. हिजाब पहनना नहीं पहनना उनका प्राइवेट इशू है, बट स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए. स्कूल में यूनिफॉर्म के बिना दूसरा पहन नहीं सकता. यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म है. बाहर घर में क्या पहनता है, कल प्रियंका दीदी ने ट्वीट किया थी उन्हें, उनका ट्वीट में क्या पहनना ये फ्रीडम है ऐसा ट्वीट किया है. सही है, फ्रीडम है, बट स्कूल में फ्रीडम नहीं चलेगा. स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए. कोर्ट में भी यूनिफॉर्म है, मिलिट्री में भी यूनिफॉर्म है, पुलिस में भी यूनिफॉर्म है. स्कूल में भी, स्कूल कॉलेज में भी ड्रेस कोड और यूनिफॉर्म होना चाहिए. बिकिनी पहन करके स्कूल और कॉलेज जा सकते हैं क्या? बिकिनी यूनिफॉर्म है तो जा सकता है. बिकिनी पहन करके स्विमिंग पूल जा सकता है, बट स्कूल जा नहीं सकता. मुझे लगता है प्रियंका दीदी के समझेंगे. अभी तक स्कूल में यूनिफॉर्म चलता था, हिजाब बुर्का नहीं पहनकर नहीं आता था. एक हफ्ते से
यूनिफॉर्म चेंज करके हिजाब पहन करके आने का शुरू किया। उसके पीछे मसलत है, उसके पीछे कैंपस फ्रंट भी है, साथ साथ कांग्रेस भी है। हिजाब विवाद का क्रूर और घिनौना चेहरा सामने आया। कुछ चंद कट्टरपंथियों ने एक मुस्लिम बेटी मुस्कान खान, जो सदा जीन में रहती है, उनके साथ और का दुरुपयोग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने और इस्लाम को दागदार बनाने का धंधा किया। असलियत सामने है, फोटो भी सामने है। इससे ये सिद्ध हो रहा है, एक तरफ कट्टरपंथी बेटियों को शिक्षा से दूर कर रहे हैं, दूसरी ओर उनके भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सारे मीडिया हाउस को कहूँगा कि इस असलियत को दुनिया के सामने रखें, ताकि कट्टरपंथी चेहरे बेनकाब हों। आज सैकड़ों हजारों मुसलमानों के शर्मिंदा हैं इस नाम पर संदेश आए, फ़ोन आए कि हमारी बेटियों का कट्टरपंथी कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं, और उनका इसी के नाम पर आया कि कट्टरपंथी कैसे मजहबी सेंटीमेंट भड़काकर इस देश का सद्भाव और भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। કર્ણાટક અને બેંગલુરુનો ઇતિહાસ ધાર્મિક હિંસા અને ધ્રુવીકરણનો સાક્ષી રહ્યો છે। આવી સ્થિતિમાં પણ ઇકોટેક ઇન્ડસ્ટ્રીએ બેંગલુરુના આંતરિક સંઘર્ષોને કોરાણે મૂકીને શહેરની બહાર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરીને શહેરની છબીને ઉજળી બનાવી છે। આ કંઈ રાતોરાત શક્ય બન્યું નથી। આજે વર્લ્ડ લીડર ગણાતી ઇન્ફોટેક કંપનીઓ બેંગલુરુમાં ઓપરેટ કરી રહી છે। ઇન્ફોસિસ, એમેઝોન, ગૂગલ, સિસ્કો, IBM, डेल, विप्रो वगैरह જેવી ઘણી કંપનીઓ છે। देखिए, ये जो हिजाब का सांप्रदायिक हाहाकार है वो हिंदुस्तान के संस्कृति और संविधान पर शुद्ध रूप से वार है, और जो हिजाब का ये सांप्रदायिक हाहाकार करके इस देश की संस्कृति, इस देश के संविधान, इस देश की के संकल्प पर वार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होंगे। हिजाब पर न कोई रोक है न टोक है। आप जो है वो बाज़ार में हिजाब पहन के जाइए, किसी ने नहीं रोका। उन देशों की तरह नहीं है जिन देशों ने कि सभी जगहों पे रोक दिया, सार्वजनिक स्थलों पे। आप बाज़ार में जाइए, आप सड़क पे जाइए, आप कहीं जाइए, जहाँ पे जो कोड है वो कोड को मानना पड़ेगा। अब उसमें ज़िद अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़िद और अकड़ जो है वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी समाज के हित में होती है। और कुछ लोग इस पूरे के पूरे मामले में जो लड़कियां हैं उनको शिक्षा से कैसे दूर करो, तालीम से कैसे दूर करो, और उनकी तालीम पर किस तरह से तालिबानी ताला लगा दो, ये कोशिश है। और ये कोशिश सफल नहीं होने देना चाहिए, किसी को भी नहीं होने देना चाहिए। મામલા કોર્ટ में है, कोर्ट जो निर्णय करेगा सभी लोगों को देखना चाहिए। બીજી તરફ દક્ષિણ ભારતમાં ભાજપની હાજરી વધારવા માટે પીએમ મોદીના પ્રયાસોના કેન્દ્રમાં કર્ણાટક છે। દક્ષિણ ભારતના 5 રાજ્યોમાં કર્ણાટક એકમાત્ર એવું રાજ્ય છે જ્યાં ભાજપ ચૂંટણી જીતવામાં સફળ રહ્યું છે। 2008માં પહેલીવાર ભાજપને રાજ્યમાં સત્તામાં લાવનાર BS યેદુરપ્પાએ લિંગાયતોનું સફળ ગઠબંધન બનાવ્યું હતું। લિંગાયતો કર્ણાટકની હાંસિયામાં ધકેલાઈ ગયેલી સમાજની વસ્તીનો છઠ્ઠો ભાગ ધરાવે છે। લિંગાયત સમાજનો એક વર્ગ ઈચ્છે છે કે તેને હિન્દુ ધર્મથી અલગ માન્યતા આપવામાં આવે। જો કે યેદિયુરપ્પા કર્ણાટકમાં ભાજપ અને મોદીને જે ઈચ્છે છે એ રીતે આગળ વધી શક્યા ન હતા। आज हमारे मुल्क में खास तौर से कर्नाटका में जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे।
क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है। એવું કહેવાય છે કે ચૂંટણી પહેલા ભાજપ માહોલ ઉભો કરવા માંગે છે। સંઘ અને ભાજપ અહીં સક્રિય થયા છે। ભાજપના ટીકાકારો એવું માને છે કે હિજાબનો મુદ્દો ભારત માટે પગ પર કુલાડી મારવા જેવો બની ગયો છે। સામ પક્ષે સમર્થકોમાં એવી વાત ચાલી રહી છે કે હિજાબના વિરોધને કારણે કર્ણાટકમાં ભાજપની હિન્દુ રાષ્ટ્રવાદની રાજનીતિના મૂળિયા ઊંડા ઉતરી ગયા છે। એવું સમજો કે ચૂંટણી પહેલાની આ તૈયારી ચાલી રહી છે। કિરણ મજુમદાર શોના ટ્વીટ પછી સવાલ એ ઉઠી રહ્યો છે કે શું સાંપ્રદાયિકતા નામે શરૂ થયેલી રાજનીતિ દેશની આ સિલિકોન વેલીની છબી કચડી નાખશે? જો એવું થશે તો તેના દૂરગામી પરિણામો બીજા કોઈએ નહીં પણ આપણી ઉગતી પેઢીએ જ ભોગવવા પડશે। આ એ શહેર છે જ્યાંથી તૈયાર થતા એન્જિનિયર્સ, ટેકનોક્રેટ આજે વિશ્વમાં દેશોમાં ભારતનો ડંકો વગાડી રહ્યા છે। સત્તા મેળવવા સાંપ્રદાયિકતાના નામે જે ખેલ હવે કર્ણાટકમાં શરૂ થયા છે એ ચિંતા ઉપજાવે એવા તો છે જ। હવે આવનારો સમય જ બતાવશે કે શું સ્થિતિ હશે દેશની। આવા જ અનેક મુદ્દાઓ સાથે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી મને આપશો રજા અને જોતા રહો કે ન્યૂઝ। નમસ્કાર।